back students to standard 10th maths chapter 4 quadratic equations, and this is the first session. All right children, now what is quadratic equation? We have learnt about quadratic polynomial. Correct children? Different types of polynomial. A polynomial with degree 0 is called constant polynomial. A polynomial with degree 1 is called linear polynomial. A polynomial with degree 2 is called quadratic polynomial. Polynomial with degree 3, it's called cubic polynomial. Polynomial with degree 4, it's called biquadratic polynomial. After that, there are no names for polynomials having degree 5, having degree 6. Alright, they are just said polynomial with degree 5 or polynomial with degree 10 and so on. Okay. Now, polynomial with degree 2. Polynomial with degree 2. Degree of the polynomial, if it is 2, then it is called quadratic polynomial. You have learned P of x. Polynomial in variable x, P of x is equal to ax square plus bx plus c, where a not equal to 0. That leading coefficient should not be equal to 0. Correct children? Follow? Okay. Now, if you remember children, the value of x for which the value of p of x, that means polynomial, becomes equal to 0 is called 0 of polynomial, is called 0 of polynomial. Correct children? Okay, be careful now. Yes. Now, same quadratic polynomial turns into quadratic equation if I take ax square plus bx plus c equal to 0. If I take that quadratic polynomial equal to 0, because of this is equal to, and when there is equal to sign in the expression, we call it equation. Correct? So this is called quadratic equation, children. Be careful. Now here, the value of x that satisfies the equation, the value of x that satisfies the equation is known as solution of the equation, and that solution of the equation is called root of the equation. It is called root. I write capital, root of the equation. So a quadratic polynomial has 0. Quadratic equation has root. Whatever are the 0 of quadratic polynomial, let me take x square minus 2x plus 1. If I take p of x is equal to this, then that is quadratic polynomial. But if I take x square minus 2x plus 1, same polynomial, equal to 0, then this becomes quadratic equation. Here it is quadratic polynomial. Okay. So if it is in the form of polynomial, we will get zeros. Zeros are what? The value of x for which p of x, the value of polynomial, becomes 0. Alright. Now, if we write that polynomial equal to 0, then it turns into quadratic equation. And the value of x for which the quadratic equation is satisfied, alright, that is called
root of the equation. That is called solution of the equation. Is that clear, children? And whatever are zeros of this quadratic polynomial, same are the roots of that quadratic equation. ये same होगा तो x square minus 2x plus 1, all right, equal to 0 equation. Okay, children, I hope you have understood. So, children, what is standard form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. This is standard form of any quadratic equation. Quadratic equation. Clear, children? Understood? So whenever we are talking about polynomials, it will have zeros, and whenever we are talking about equation, it will have roots. All right, children? Okay. Now, what do you mean by solution of quadratic equation? Please. What do you mean by solution of quadratic equation? Children, if any quadratic equation is given to you like x square minus 3x plus 2 equal to 0, then put x equal to 1. Put x equal to 1 in this equation on left hand side. Left hand side पे x equal to 1 लिखो. So left hand side is equal to 1 square minus 3 into 1 plus 2. So 1 minus 3 plus 2. 1 plus 2, 3. 3 minus 3, that is equal to 0. And that is equal to RHS. Satisfied. That is equal to RHS. You can take x equal to 2. Take x equal to 2 and see what you are getting on left hand side. In place of x, you are taking 2. 2 square minus 3 into 2 plus 2. That is 4 minus 6 plus 2. 4 plus 2 is 6 minus 6, and that is 0. Take x equal to 3. Take x equal to 3 and see the left hand side. X square minus 3x plus 2. 3 square minus 3 into 3 plus 2. 9 minus 9 plus 2 plus 9 minus 9 gone. That is equal to 2. So this is not equal to 0. Correct? This is not equal to RHS. This is equal to right hand side. Right hand side पे 0 है ना? Alright. So for x equal to 2 and x equal to 1, these values satisfy the equation. You get left hand side is equal to right hand side. So x equal to 2 and x equal to 1 are solutions of this quadratic equation. Are you getting me? और उसी को कहते हैं roots, या पहले रूट को अल्फा कहते हैं, जैसे 0 को बोलते थे. So alpha equal to 2 and beta equal to 1. These are the two roots of quadratic equation. Is that clear? We'll come back to the roots again later. Okay? Now, how to find the solution? आपको कैसे पता लगेगा कि x equal to 2 है, x equal to 1 है, x is not equal to 3, वो solution नहीं है. So how will you find out the solution of quadratic equation, or how will you find out the roots of quadratic equation? Children, there are three methods. Which are they? Let's see. Methods of finding roots or solution of quadratic equation. First method, method of factorization. Yeah, factorization method. Second method, completing square method. Children, it is also called difference of perfect square method. Difference of perfect square method. In your book this is mentioned, this is not mentioned. All right? And the third method is the general formula method, or we simply say the formula method. Either call it just formula method or the general formula method.
So these are the three methods which will help you to find the solution of quadratic equation, or you can say we can find the roots of quadratic equation. So in today's session, let us learn how to find the roots of quadratic equations by using factorization method. Children, you already know how to factorize a quadratic polynomial. Do you remember? There a lot of practice of factorizing quadratic polynomial was not only done in 8th but also in 9th standard. And even in my revision session in 10th standard, I've done that. Okay? Anyways, today also we'll see in detail how we can factorize a quadratic polynomial. Alright? Yes, we need to factorize polynomial to get the roots of quadratic equation. So let us see solution of quadratic equations by factorization method. Are you ready? Come on. So here they are. Find solution or roots of the following quadratic equations. The first one, 2x square plus minus 5x plus 3 equal to 0, 6x square minus x minus 2 equal to 0. Equation है, so equal to 0, equal to 0 हो तो that is the standard form. Alright, children, आपको पता है फैक्टराइजेशन में स्टेप 1 करते हैं एंड स्टेप 2 करते हैं. ऑलराइट, व्हाट इज स्टेप 1? फाइंडिंग द प्रोडक्ट. स्टेप 1 में हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, राइट? ओके, ऑलराइट. और स्टेप 2 में पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, पेयर्स ऑफ फैक्टर्स. प्लीज पे अटेंशन. किसका प्रोडक्ट ढूंढेंगे हम? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोएफिशिएंट जो हो वो, एंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज 3. दोनों को मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट इज 2 3s are 6 and sign is very important, same sign, so plus. So first step is done. Product is plus 6. All right, now you have to obtain pairs of factors of this 6 के pairs of factors, and for that you find the prime factors first. 2 3s are, 3 1s are. Now I am going to write the pairs of factors. Prime factors मिल गए, लेकिन मुझे चाहिए pairs of factors. All right. Yes, 1 is a factor of every number. So 1 into what is 6? 1 6 are. After 1, check whether 2 is a factor. Prime factors निकाला है, so you can find out very easily. Yes, 2 is a factor. So 2 into what will give you 6? Hide 2. 2 3s are. That's it. After 2, what is the next factor? 3. All right. क्या है वो factor? Yes, 3. So write 3. 3 into hide 3. 3 into 2. Children, 2 into 3 and 3 into 2. वो तो क्रॉस हो गया. सो दैट इज वन एंड द सेम पेयर ऑफ फैक्टर. सो आपको दो बार नहीं लिखना है. और यहां ये सिचुएशन में हमें पता चल जाता है, वी डिटरमाइन दैट देयर आर नो मोर पेयर्स ऑफ फैक्टर्स. ऐसी स्थिति बन जाए तो समझ लेना कि आगे कोई भी पेयर ऑफ फैक्टर नहीं है. इसको निकाल देता हूं. दैट इज वन एंड द सेम, एंड देन आई कवर अप देम विद कर्ली ब्रैकेट एंड देन राइट यस 6 जो भी प्रोडक्ट है विथ साइन. ऑलराइट. यदि प्लस है तो ऐड दिस. ये मल्टीप्लीकेशन साइन को फॉर अ मोमेंट भूल जाओ. फॉर अ मोमेंट मल्टीप्लीकेशन साइन को भूल जाओ. यहां प्लस है तो ये ऐड करो पेयर को. लाइक 6 plus 1 7. दिस विल बी 3 plus 2 5. ओके. हमें अब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट देखना है. व्हाट इज मिडिल टर्म कोएफिशिएंट? 5. Yes. Which pair of factor gives you the sum? सम ही लेना है 5. तो 2 and 3 उसको सिलेक्ट कर लिया. ऑलराइट चिल्ड्रन. अब इसमें बड़ा वाला जो भी है पेयर ऑफ फैक्टर एक बार चूज हो गया तो जो बड़ा वाला है उसकी बर्थडे है. The big number is having its birthday, so we will be gifting the sign
उसको कुछ गिफ्ट देंगे, गिफ्ट में साइन देंगे प्लस या माइनस, जो मिडिल टर्म की साइन है वही बड़े वाले को देंगे। सो हियर इट इज माइनस, बड़े वाले को तो गिफ्ट मिल गई, वो -3 होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये अभी 2 3 6 तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस डिफरेंट साइंस तो माइनस बन जाएगा, लेकिन होना चाहिए प्लस। सो दैट मीन्स पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सो बोथ द फैक्टर्स विल हैव सेम साइन। सो ये 2 को भी माइनस दे दो और वही लिख दो यहां, दैट इज इक्वल टू 2x² और +3 इक्वल टू 0। दिस मिडल टर्म इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, उसके 2 पार्ट्स हो गए, -2x और -3x। वो नंबर के साथ x इज एसोसिएटेड, सो 2x - 3x जो भी है, ओके, 2x - 3x लिख दिया। नाउ अप्लाइंग 2 + 2, यहां therefore आएगा, पोलिनोमियल में इक्वल टू आता था, इसको कहते हैं इंडिकेटर। सो यूज प्रॉपर इंडिकेटर्स बेटा, चिल्ड्रन बराबर इंडिकेटर्स यूज करना। सो therefore यहां से 2x कॉमन, x -1, यहां से -3 कॉमन, साइंस विल चेंज इन द ब्रैकेट, -1 इक्वल टू 0। इसको बाद में लिखता हूं मैं। therefore दिस इज कॉमन ब्रैकेट x -1 और दूसरी ब्रैकेट में 2x -1 इक्वल टू 0। चिल्ड्रन नाउ लेट्स रिकॉल द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। a multiplied by b equal to 0. Product of two real number is 0. It is possible only when one of them is 0. a equal to 0, either a equal to 0 or b equal to 0। दो में से एक तो 0 होना ही चाहिए, करेक्ट, या दोनों 0 हो तो भी 0 into 0 is 0, but you know one of them has to be 0। So here bracket into bracket equal to 0. So what you have, first bracket equal to 0 or second bracket is equal to 0 using the property of real numbers. Acha, now this is simple equation of 7th standard linear equation. So x is equal to 1, एक solution मिल गया। Here 2x is equal to 3, therefore x is equal to 3/2, 3/2, correct। solution set ब्रैकेट में लिखेंगे, solution set लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिख दो। चलिए, फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज 3/2। दिस इज द solution set, या रूट्स alpha is 1 and beta is 3/2. Is that clear, children? So this is how we find solution of quadratic equation by factorization method. All right, let's see the second one now. Here it is. All right, 6x² minus x minus 2 equal to 0. Now first step, yeah, first you see whether it is in its standard form or not. Yes, ax² plus bx plus c equal to 0, standard form तो है। Now coefficient of x², that is 6, pick up with sign, constant term, that is 2 with minus sign, दोनों को multiply करो, 6 2s are 12, different sign, so product is negative। Now you obtain the prime factors of 12, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are। Now let us write down the pairs of factors of 12. Okay, 1 is a factor of every number, so 1 into 12 is 12। Then is 2 a factor, 1 के बाद 2 चेक करो, 2 के बाद 3 चेक करो, 3 के बाद 4 चेक करो, 4 के बाद 5 चेक करो, जब तक क्रॉस या दोनों पेयर ऑफ फैक्टर इक्वल ना हो जाए। ओके, so 1 के बाद 2, is 2 a factor? Yes, so फिर लिखो 2 into what? Now you just hide 2, तो remaining 2, 2 and 3, remaining two factors are 2 and 3, 2 3s are 6, 2 6s are। ऑलराइट, ये तो छोटा है, ऐसे भी पता चलता है। आफ्टर 2 3, is 3 a factor? Yes, वो भी है 3, करेक्ट, हाइड 3, 2 2s are 4। ऑलराइट, 3 के बाद 4, is 4 a factor? Yes, डबल 2 है, प्रोडक्ट करके भी देखना पड़ेगा, 2 2s are 4, so 4 is a factor, वो डबल 2 को हाइड कर दो, into 3, ये तो क्रॉस हो गए। सो अब आगे देयर आर नो मोर
pairs of factors और इसको भी निकाल देता हूं and I'm going to cover up with curly bracket, all right, and the product with sign लिखो 12 with minus. Now there is minus sign, आपको मल्टीप्लिकेशन को भूल जाना है और डिफरेंस देखना है. 12 minus 1 11, 6 minus 2 4, 4 minus 3 1, all right. तो अब you concentrate on the coefficient of middle term. Middle term का coefficient क्या है? -1 मतलब 1. So which pair of factor gives you difference? यहाँ difference लेना पड़ेगा. Which pair of factor gives you difference of 1? ये रहा, सिलेक्ट कर लो. और उसमें जो pair of factor सिलेक्ट किया उसमें बड़े वाले फैक्टर की हमेशा बर्थडे होती है, तो उसको हम गिफ्ट देंगे. क्या गिफ्ट देंगे? Whatever is the sign of middle term minus, बड़े को दे दो. Alright. Now the product is negative. सेम साइन हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव बन जाता है, डिफरेंट साइन हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव रहता है. तो यहां नेगेटिव है तो डिफरेंट साइन. यदि 4 इज माइनस देन 3 हैज टू बी प्लस, तभी डिफरेंट साइन होगा. हो गया. therefore, ये इंडिकेटर therefore जब भी इक्वेशन आएगा तो therefore 6x स्क्वायर, अभी इसको स्प्लिट कर रहा हूं, माइनस x प्लस 3x minus 4x and the last term is minus 2 equal to 0. After that grouping 2 plus 2 terms कर देते हैं, 1 2 3 4 terms, say 2 plus 2, so 3x is common. 3x is common, so what you'll have in the bracket? 3 2s are and x into x plus 3x is already there, so it's 1. Then what's common? Minus sign is there and 2 is common. Children, because of minus, bracket में sign बदल जाएगी. 2 into what? 2 into x. 2x. This minus turns into plus. It's already 2, so 2 ones are. देखो same bracket आ गई. Therefore, 2x plus 1 into, that is common from the two terms, and 3x minus 2 is equal to 0. Use property of real numbers. So therefore 2x plus 1 equal to 0 or 3x minus 2 equal to 0. अब ब्रैकेट मत लिखो, चलेगा. करेक्ट. Now solve this. Therefore 2x is equal to minus 1. Therefore x is equal to minus 1 upon 2. Here, therefore, 3x is equal to 2. Therefore, x is equal to 2 divided by 3. So, x equal to minus 1 upon 2 and x equal to 2 upon 3. That is the solution set. Solution set is equal to, the first value of x is minus half. The second value is 2 upon 3. Alright? Is that clear? Or you may write alpha is equal to minus 1 upon 2 and beta is equal to 2 upon 3. ऐसे भी लिख सकते हैं. That depends. Question क्या कहा गया? Find the solution. तो ऐसे लिखो. Find the roots. Then you may write alpha is equal to and beta is equal to. Is that clear, children? Ready for the next one? Number 3. Okay. Here's the third one, children. Let's see. 3x square minus 2x plus 1 upon 3 equal to 0. Yes, there is involvement of rational number. So what we do, children? We will simplify first by taking LCM upon 1 upon 1. Therefore, whole upon 3, that is equal to 0. So what you will have? 1 into 3. 1 into 3 and 3 into 1 is 3. You know that, right? Now, 3 3s are 9x square minus 3 2s are 6x plus 1 3s 1 1s are 1. 1 into 1 is 1. Therefore, 9x square minus 6x plus 1 equal to 0 multiplied by 3. Multiplied by 3, I am not writing. 0 into anything is 0 only. So when 3 goes on other side, it will multiply with 0 and become 0. Alright. Now I got, yes, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही था.
लेकिन there was involvement of rational number. Here there is no rational number now. These are all integers. Coefficients are integers. All right. Now step 1, step 2. आपको coefficient of x square और constant term 1 उसका product ढूंढना है. 9 ones are 9 and same sign, so plus. Very important. Prime factors of 9. 3 3s are 3 ones are. Now pairs of factors of 9. 1 is a factor of every number, so पहले तो 1 लिख ही दो. 1 into 9. 1 के बाद 2, लेकिन यहाँ कोई भी प्राइम फैक्टर 2 नहीं है, so 2 is not a factor of 9. 2 को स्किप करो. उसके बाद 3. Yes, 3 is a factor. 3 into 3. चिल्ड्रन, रिपीट होते हैं दोनों फैक्टर तो भी स्टॉप कर दो. क्रॉस होते हैं या रिपीट होते हैं, these are the two situations where you have to stop because there are no more further pairs of factors. Pairs of factors सिर्फ 2 है, उसके आगे है ही नहीं. All right, now I am going to cover it with curly bracket and then write plus 9. प्लस है मतलब सम लेना है आपको, सम या एडिशन करना है. तो या इसको भूल जाओ. 9 plus 1 10 और 3 plus 3 6. हमें चाहिए क्या? 6. देखो मिडिल टर्म का 6. सो सिलेक्ट दिस. यस. अब बर्थडे किसकी है? दे आर ट्विंस. ऑलराइट. एनीवे, अब जब बड़ा कौन है छोटा कौन है पता नहीं है. चिल्ड्रन, ट्विंस होंगे तो भी सेम टाइम तो जन्म नहीं लेंगे. कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 5 मिनट का भी डिफरेंस होगा. सो पहले जो जन्म लेगा वही बड़ा होगा. तो भले ट्विंस है लेकिन दो में से कोई एक तो बड़ा है. कोई भी ले लो. ओके, उसको मिडिल टर्म की साइन दो माइनस. सो इसको माइनस दे दिया. नाउ प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सो यहां दोनों सेम साइन होनी चाहिए. देन ओनली द प्रोडक्ट बिकम्स पॉजिटिव. सो इसका माइनस है तो इसका भी माइनस. देन यू मे राइट दैट ये मिडिल टर्म का -3x -3x स्प्लिट किया and the first term is same. Therefore, first term is 9x square and the last term is plus 1 equal to 0. Now take the pair. Therefore, क्या common है? 3 and x. 3 3s are 9x with minus. 3x is already common. 1 minus. Nothing is common except 1. So same sign will change because of this minus. That's it. Therefore, 3x minus 1 into 3x minus 1 equal to 0. Therefore, 3x minus 1 equal to 0 or 3x minus 1 equal to 0. So this is 3x is equal to 1. Therefore, x is equal to 1 upon 3. Therefore, 3x is equal to 1. Therefore, x is equal to 1 upon 3. Children, ये repeated root है. इसको कहते हैं repeated root. Repeated roots या equal roots या same roots या identical roots. Few words are used for them. All right. So only one root is there, but it is repeated. 1 upon 3, 1 upon. So that's the solution of this quadratic polynomial number 3. Clear, children? Good. Okay. Are you ready for the next one, number 4? Let's see. Okay, here is the fourth one. X minus 1 upon x is equal to 3. Where x is not equal to 0, the first appearance of this equation will make you to conclude that ये तो quadratic equation ही नहीं है. There is no degree 2. But actually it is quadratic equation. We'll have to simplify and see. So first we'll do the simplification work. ये LCM निकालो. 1 और x का LCM x. 1 into x and x into 1. That gives me x into x, x square minus 1 into 1, 1 is equal to 3. Cross multiplication. X square minus 1 is equal to 3x. Bring it on this side. X square minus 3x minus 1 equal to 0. ये 3x से बाजू लाए. All right. Now step 1, finding the product.
इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म है -1, सो प्रोडक्ट इज -1। 1 का फैक्टर क्या निकाले, 1 1 नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। 1 इंटू 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, 1 इंटू व्हाट 1, उसके बाद कुछ नहीं है, रिपीट हो गया, सो ओनली 1 फैक्टर। और -1 यहां डिफरेंस है, माइनस मतलब डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस करेंगे तो 0, लेकिन हमें तो चाहिए 3, उसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। ऑलराइट, यू कैन नॉट यूज फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जो सिंपल फैक्टराइजेशन से भी मिलेगा, लेकिन हमने जो फैक्टराइजेशन सीखा है उससे नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो हियर आफ्टर दिस वी हैव टू सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? अब ये जब फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो यू हैव टू यूज द अदर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यू डोंट नीड टू वरी, आपको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन होगा तो ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो कुछ ऐसा हो सकता है। ऑलराइट चिल्ड्रन, और जनरल फॉर्मूला मेथड वो तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप मेथड यूज कर सकते हैं। Is that clear, children? Okay, so I'll just write completing square method is required. I'm not solving it here. All right, children? Okay, we are going to see tomorrow's session, next session, we are going to solve by completing square method. Is that clear? Now we shall, this is very important. आपको लगता है कि यहाँ कोई zeros, I mean कोई solution है ही नहीं, हो सकते हैं उसके solution, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर भी हो सकता है उसका सॉल्यूशन, रेशनल हो या इरेशनल, आफ्टर ऑल दे आर रियल नंबर्स। ओके, और कभी कभी सॉल्यूशन न भी होगा, उसका कोई भी रियल नंबर्स आपको मिलेगा ही नहीं, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ऑलराइट, 3 कंडीशंस है, या रियल वैल्यू मिलेगी एक्स की या नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। अभी रियल वैल्यू होगी तो उसकी 2 प्रकार की वैल्यू हो सकती है, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। अब यहां क्या हुआ, यस, स्टेप 1 स्टेप 2 इन फैक्टराइजेशन मेथड इज नॉट हेल्पिंग अस आउट, करेक्ट? सो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी रेशनल वैल्यू तो है ही नहीं, रियल नंबर हो भी सकता है और नो रियल वैल्यू भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, लेकिन द आंसर, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नेवर बी अ रेशनल नंबर, इट इज आइदर इरेशनल और नो रियल नंबर, रियल नंबर ही नहीं होगा। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फर्दर, सो नॉट टू वरी। राइट नाउ आपको सिर्फ सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करना है, हाउ टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर टू यू? ऑल नाउ लास्ट वन फॉर दिस सेशन चिल्ड्रन, एंड दैट इज नंबर 5. So here is the 5th one. Let's see. This also doesn't look like quadratic equation, so we'll have to simplify. All right, denominators का LCM, ये binomial और ये binomial, दोनों का प्रोडक्ट इज द एलसीएम, x plus 4 into x minus 7, that will be the LCM. ऑलराइट, क्योंकि इसमें से कोई फैक्टर निकलते नहीं, इसमें से भी कोई फैक्टर नहीं निकलते, और कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं निकलते तो कॉमन फैक्टर की बात ही नहीं हो सकती। चलिए, या x, ये एलसीएम में से यहां कौन सा है, x plus 4 है, सो मल्टीप्लाइड बाय x minus 7, और ये एलसीएम में से यहां x minus 7 is available, so what is left out, x plus 4. ऑलराइट, now 1 into x minus 7, that is x minus 7, यहां प्लस है, so I'm not using the bracket. 1 into x plus 4, वो x plus 4 ही है, लेकिन आगे माइनस है, so I'm putting in the bracket. That is equal to 11 upon 30. Children, here x not equal to minus 4 and x is not equal to 7. That is condition. x की ये 2 वैल्यू नहीं हो सकती। Why? ऐसा क्यों लिखा क्वेश्चन में? Suppose if you take x equal to minus 4,
तो -4 + 4 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, and you can never have 0 as a denominator. Here, if you take x equal to 7, 7 minus 7 is 0, and once again we'll have 0 in the denominator, but that is not possible. So x is not equal to -4 and x is not equal to 7. Under these two conditions, x की ये दो वैल्यू नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ और हो सकता है. चलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30, इसका सिंप्लीफिकेशन भी कर देते हैं. x -7 minus x minus 4 is equal to 11 into x plus 4 into x minus 7 plus x minus x cancels. This is 30 into minus 11 is equal to 11 into x, x square. Then children, if you remember, ये दोनों का प्लस करो. +4 minus 7, that is -3 into x. फिर ये दोनों का प्रोडक्ट करो. 4 7s are 28, different sign, so minus sign. That's the expansion. चलिए, this gives me 330 with minus sign is equal to 11x square minus 33x minus how much? 280 and 28. So 308. All right. Therefore, 0 minus 330 we are taking on the other side. 11x square minus 33x minus 308 plus 330. Correct? i.e. ये पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूं और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड 0 राइट हैंड साइड पे लिखता हूं. So this is 11x square. That is symmetry, property of real numbers, minus 33x और ये is 22 with plus sign. 22 with plus sign. Children, इसका रिडक्शन हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है. 11, 33 और 22 में 11 is common. Therefore, take 11 common. After taking 11 common, what do you have in the bracket? 11 into x square minus 11 into 3 into x plus 11 into 2. That is equal to 0. Therefore, x square minus 3x plus 2 equal to 0 upon 11. That is again 11. 0 upon 11 is 0, not 11. Okay, fine. अभी मिल गया. Step 1 product. यहां 1 है. Correct? Here we have 1. 1 into 2. That is 2 with plus sign. और एक ही pair of factor है. 1 into 2. Only one pair of factor मिलेगा. और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो आपको सम देखना है, तो इसको भूल जाओ. या टोटल 3 है बट द मिडल टर्म इज नेगेटिव, सो बड़ा माइनस. दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब सेम साइन होना चाहिए, तो ये भी माइनस. दैट्स इट. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. माइनस एक्स माइनस 2x. सो therefore x is common, x minus 1 minus 2 is common, x minus 1 is equal to 0. So x minus 1 into x minus 2 equal to 0. So x is equal to 1 or x is equal to 2, i.e. alpha is equal to 1 and beta is equal to 2. यहां और लिखते हैं लेकिन बाद में अल्फा बीटा लिखते हैं तब एंड. Alright children, so you have to solve exercise 4.1. Homework exercise 4.1 question 1. This is what you solve. All right, children? Well, no need of doing that because I have not done example 2 with you. Yes, in the next session, let us see example 2, okay? And then you can solve that. But same sums, those 5 sums that I have done, you do it. Okay, I will give you 2 sums. In fact, 3 sums for your homework. 5 I have done. 6 is 5x square minus 6x minus 2 equal to 0. 7th is 4x square plus 3x plus 5 equal to 0. And 8th is 9x square minus 15x plus 6 equal to 0. So solve this 3 for homework. Is that clear?
So that's all in this session. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day.